What's up guys, Praful here, welcome back, thanks for joining in. Today is 28th of September, today is Tuesday and the time is 6 o'clock. And I'm making a video at this point because I had no plans of taking a trade today and I still went ahead and took the trade and managed it in a very shabby, complacent and how do I put it? In a very unprofessional way. So I took a loss of around 16k. But talking about the markets, we had one of those markets where it was just all over the places. Especially Bank Nifty, we had a 1,000 point fall and an 800 point up move. But the 800 point up move, it came with such ferocity that the put options just crashed like anything. And so at one point, the OTM put options of both Nifty as well as Bank Nifty, they gained up to 5x in value. मतलब 7 rupees का ऑप्शन 35 तक गया था, 10 रुपी का ऑप्शन 50 तक गया था. And during this up move, of course, like consequently they had to give up whatever they have gained and even more. So pretty amazing day. It's not, it can't even be called like V-shaped recovery क्योंकि angle देखो, it's a proper vertical line, it's a vertical recovery. Talking about my own mistakes, I did series of mistakes because मैंने आज ट्रेड करने का इरादा ही नहीं था. मैंने सोचा कि ठीक है, एक 1000 क्वांटिटी में ले लूंगा एंड उसके बाद में उसको मैनेज करूंगा. तो देन क्या हो गया, देन for some reason I got a bit lazy, I got a bit complacent and मैं थोड़ा बहुत सोया, थोड़ा बहुत मतलब गेम्स खेलना शुरू किया. The smaller position size made me a bit overconfident क्योंकि हाँ यार 1000 क्वांटिटी तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है. But even in that 1000 quantity, later I added another 500 quantity, 30 lot से मतलब ट्रेड कर रहा था. उस पॉइंट पे मैं ट्रेड कर रहा था. It's already up by around 7-8 points when the markets were somewhere here. Markets जब यहाँ पे थे तब I was up by around 6-7 points पे ऊपर था मैं, and this MTM was also up somewhere around 22-23k in the positive. Then after that, when the market started falling, then I did a shabby kind of adjustments, and at one point जब मैं इस पॉइंट पे मतलब फिर से अगर जब मार्केट रिकवर होना शुरू हो गया, अगेन आई गॉट अ बिट कॉम्प्लेसेंट. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज समवेयर अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं पे तो चल रहा था. एंड आफ्टर 15 मिनट्स जब मार्केट इस पॉइंट पे आके खड़ा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डिडंट इवन थिंक, मैंने पैनिक एग्जिट बटन दबा दिया एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम. अगर मैं नेक्स्ट 10 मिनट भी वेट करता तो ऑल द पुट ऑप्शन आईवीज दैट वर स्पाइक्ड अप, दे प्रीटी मच क्रैश्ड एट दिस पॉइंट. इस अप मूव पे पूरा पुट ऑप्शन का आईवीज क्रैश हो गया था एंड आई कुड हैव डन समथिंग एंड आई कुड हैव easily stayed in the game for another 1 hour. But why did I do the panic exit? Why did I get into the panic exit? That is what we're going to discuss today and that is the lesson for the video. मैंने पैनिक एग्जिट इसलिए दबाया, मैंने इमोशनली इसलिए मैंने बिहेव किया बिकॉज मेरे पास कुछ और रास्ता ही नहीं था. प्लान क्या था मेरे पास प्लान नहीं था बिकॉज आई डिडंट इवन वांट टू ट्रेड टुडे एंड मैंने ट्रेड ऐसे नाम के वास्ते लिया. जब मैं ट्रेड नाम के वास्ते लेता हूं तो उस ट्रेड के बारे में मेरा कुछ प्लान नहीं रहता. ये होता है तो मैं क्या करूंगा, ये होता है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा, बिल्कुल प्लान नहीं था. यूजुअली व्हेन आई टेक द ट्रेड्स, यूजुअली माइंड में एक प्लान बना रहता है कि भाई ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, अगर इसके नीचे या इसके ऊपर आ गए तो क्लोज करके मैं बैठ जाऊंगा. सो दिस वाज द प्लान. बट आज ऐसे मूड में था मैं, आई वाज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग गेम्स एंड आई वाज टेकिंग नैप्स एंड मतलब बाहर जाके आ रहा था तो सब मार्केट के टाइम पे ही मतलब कर रहा था फॉर सम रीजन which is definitely not my general way of doing things. But today was bit of an exception. Either it's because of the fatigue of constantly trading for a long time, or maybe you can say that a bit of overconfidence because of the smaller position sizing. मतलब हाँ क्या है, 1500 quantity तो है, किसी भी तरह मतलब मैनेज हो जाएगा. तो that was kind of an overconfidence. तो वो थोड़ा overconfidence से भी मतलब हो सकता है कि what led to this. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने पैनिक एग्जिट दबाया बोथ ऑन निफ्टी एज वेल एज माय बैंक निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड्स. तो एट दिस पॉइंट आई गॉट द वर्स्ट पॉसिबल एग्जिट. अगर मैं 10 मिनट भी होल्ड करता या यहां पे भी अगर मैं एग्जिट करता, इफ आई हैड एग्जिटेड हियर आल्सो, दिस वुडंट हैव बीन 16k, दिस वुडंट हैव बीन 16k, इट वुड हैव बीन एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट. मैं इसके नीचे भी एग्जिट करता तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता बिकॉज आई एग्जिटेड एट worst possible price.
एंड वर्स्ट पॉसिबल प्राइस जब एग्जीक्यूट होते हैं when you don't have any plans. So the lesson I want you guys to take from my loss and my mistake is that whenever you don't want to trade, better don't trade. नाम के वास्ते मत करो. Not just trade, I think it goes to anything in life. अगर कुछ करना है तो पूरा मन लगा के करो. अगर नहीं करना है तो आधा. Don't half-ass it. Okay, don't half-ass anything in life, including trade. And today is an example. I'm फॉर्चुनेट टू टेक अ स्मॉल लॉस, मतलब 16K का लॉस लेके मतलब मुझे क्लोज कर रहा हूं मैं, सो विच इज अ गुड थिंग. एंड वंस इन अ वाइल वी ट्रेडर्स टेंड टू डू दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, लाइक ईदर आफ्टर वन पॉइंट, लाइक ईदर वी गेट a bit overconfident, either we get a bit cocky, or either we get a bit complacent. Sometimes we start taking markets for granted, but once in a while these mistakes get a bit repetitive in nature, because at the end we are all humans. So anyway, in spite of this loss, we are still up by around 5% post charges के बाद भी we are up by 5% on this month. So कल Wednesday है and परसों monthly expiry है. Let's see like how much we can get. I try to stay risk averse, like not gonna take too much of the risk for tomorrow and day after. Let's see how we perform. And मैंने social media पे थोड़ा बहुत comments पढ़ा है, क्योंकि a lot of people are having a rough time, especially people who trade like strangles and straddles both on intraday and positional basis. You guys are having a bit of a rough time in September, and yes, September has been a rough month, because not only we had 1,000-point rally in September, but we saw occasional sudden downfalls, and again like V-shaped recoveries. Intraday में ही recovery हो रहे थे and gaps हो रहे थे. So yeah, September has been pretty tough for all the option sellers, to say the least. But don't give up hope. तो मेरे लॉस को देख के एटलीस्ट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज दिस लॉस वाज नॉट प्लान्ड. ठीक है, अनप्लान्ड लॉस था ये, क्योंकि आज ट्रेड करने का प्लान ही नहीं था. तो दिस लॉस इज सम काइंड ऑफ एन अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम्स. लाइक कल वेंसडे है. लेट्स ट्राई टू गेट सम टीटा टुमारो. आई होप यू गाइज हैड अ गुड ट्रेडिंग डे, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. चलो, बाय बाय.